हेलो एवरीवन। तो जैसा अभी सर से कुछ देर पहले आपने मुलाकात की थी, तो हम थोड़ा टहलते टहलते हमें निशान भी मिल गए। तो सोचा कि क्यों ना आपके कुछ और डाउट्स भी क्लियर कर दें, क्योंकि निशान जो है वो पोस्टेड है हेल्थ यूनिट, जो कि हमारा ईस्टर्न रेलवे में है, वर्धमान, वहाँ पे ये पोस्टेड है। तो बहुत लोग ऐसा जानना चाह रहे थे कि हेल्थ यूनिट में क्या वर्किंग रहता है, क्योंकि अभी IELTS 2020 बैच वालों का कैडर लोकेशन भी हो गया, उन बहुत सारे लोगों को रेलवेज़ भी मिला है। तो जिन्होंने MBBS की हुई है उनको ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो हेल्थ यूनिट में पोस्टेड हो। तो सर ने तो PG के बारे में बता ही दिया, एज ए स्पेशलिस्ट आपको कैसा रहेगा रेलवे ज्वाइन करना। तो हम निशान से जानेंगे कि उनका अभी तक का एक्सपीरियंस हेल्थ यूनिट में कैसा रहा। Thank you, Dr. Sagar Pushp. As we have discussed that we will make one video together regarding the working of the health units, as there are many chances that most of us who joined this Indian Railway Health Services, they are going to be posted and given independent charge at health units. So the health units, basically you need to understand that it is not simply that you have to look after the patients. It involves the complete care of the patient as well as some of the administrative work that we have to do. So what is a health unit? Basically health unit is a defined area where there are some number of stations and you will be posted at a major station. So in that area you have to execute some of the works. So what are the different types of works that you have to do? So one part will be that of the OPD patients that you have to look after, and the other part would be the administrative part that you have to look after. So when we come to that OPD part, you have to look after two different types of people. One is the employees working in that jurisdiction of particular area, as well as the retired employees that you have to look after. So the employees that you're working within your area is divided into two. One that on a particular station where you are posted, and the other employees who are posted in the jurisdiction, that is in line, that we say it is in the line. And the second category of the employees is the retired employees, which are covered under the RELHS scheme of the healthcare. Now the government of India has implemented that the Indian Railways, even in the health units, we are going to propose the HMIS system. Through that system, we are trying to link through one card in the railways, which is known as the Umeed card, and through that we are going to avail the services to all the employees. So how a normal day, the main thing is that in a health unit, what different types of works we have to do. So first, let's start with the normal OPD. So as a day begins, you have to start with your OPD works. In the OPD works, it is divided into two different types of OPDs. One for the normal patients that are coming, either the family or the retired employees, to whom you have to either issue some monthly medicines or for the minor illness that you have to look after. During the same OPD hours, you have to see one basic thing, that is the industrial medicine. So what that industrial medicine is, that if a person or an employee is working in a particular area, he is not feeling good, then he can't do his duty. So due to which he is not unable to perform his duty, then there is one thing which is in the railways known as the sick list. So you have to keep that person in your sick list, and once for a particular days you will do follow up, and once he is fit, then you have to discharge through and give him the fitness. So that is the one part of the industrial medicine during OPD work. So OPD work includes seeing the patients. Then second will be your normal the people or the employees that are coming. So as Nishan told you all about the OPD works in health unit. Now we have हमारे सर हैं, तो इनसे जानेंगे कि सेंट्रल हॉस्पिटल में OPD वर्क्स कैसा रहता है। सेंट्रल हॉस्पिटल में जो OPD वर्क रहता है, बेसिकली एक मेडिकल कॉलेज की तरह से रहता है, जिसमें OPDs होती हैं, IPDs होती हैं। पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट का मैं पर्टिकुलरली बताना चाहूँगा, इसके अंदर OPDs होती हैं, IPDs होती हैं। इसके अलावा PICU है, इसके अलावा हमारा NICU है। NICU के अलावा OTs हैं जिसमें अटेंड करना रहता है, और डिलीवरी रूम्स हैं। इसके अलावा जो हमारे DNB हैं, उनकी टीचिंग्स भी लेनी होती है। इसके अलावा थीसिस के लिए भी उनको असिस्ट करना रहता है। तो जैसे सर ने बताया, तो अब निशान से आगे जानेंगे कि हेल्थ यूनिट के बारे में। Okay, the one thing is that the IPDs, as told by the sir, we are not catching the IPD, though we are the first aid provider. The second part is with these is the normal emergency patients that you have to look after. You have to give them first aid, either if it is operable within your limits, you do that, or you refer to the higher center like you do in the primary health centers. The second important part is of the passengers.
We also give care to the passengers of the train when they fall ill. That is known as the station calls. So whenever there is a person who falls sick during his journey nearby your station, you will be called upon. The train will be stopped at your station, and you will attend the patient and give the preferred medicines or whatever treatment he may require. So that is a one more important part of the you have to execute at health units. And beyond these emergency treatments, you have to look care for the employees that are working at your line stations part also. In those line stations part, the people are regularly, whenever they are falling sick, or you have to do some visits to these line stations and do some regular health checkups, or you have to do anything that is related to those stations, the employees will come to your part. This is overall what you are doing in your OPD hours. Beyond that, I will discuss what are the administrative works and other works beyond the patient care that we are doing in the health units. डॉक्टर सागर, तो जैसे कि आपने इतना सब जाना हेल्थ यूनिट के बारे में, तो सर से मैं और जानना चाहता हूँ कि सर जो डीएनबी के स्टूडेंट्स होते हैं, तो जैसे माना जाता है कि डीएनबी में एकेडमिक्स का बहुत प्रॉब्लम रहता है, मेनली वो लोग क्लिनिकल वर्क में फोकस करते हैं और उनकी एकेडमिक्स अच्छी नहीं रहती है। तो हमारे रेलवे हॉस्पिटल्स में एकेडमिक्स की बात करें तो कैसा रहता है? ऐसा नहीं है कि डीएनबी के जो एकेडमिक्स पोर्शन होते हैं तो वो वीक होते हैं। एकेडमिक पोर्शन की क्लासेस वगैरह भी हमारे यहाँ पे होती है और ट्रेनिंग भी दी जाती है उससे रिलेटेड। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी डीएनबी की तरफ से भी क्लासेस होती हैं जो कि नेशनल बोर्ड की तरफ से रहती हैं, जिसके लिंक्स जो है जो कंसल्टेंट इंचार्ज होते हैं उनके पास में आ जाता है, और वेबिनार्स होती हैं उनकी डिफरेंट, तो उसके थ्रू उनका पूरा टीचिंग प्रोग्राम चलता है। इसके अलावा हम लोग सेमिनार्स वगैरह भी करवाते हैं अपने यहाँ पे, और उनको अलाउ भी करते हैं डिफरेंट पेडिकॉन्स वगैरह, न्यूकॉन्स वगैरह को अटेंड करने के लिए। सर पासिंग रेट कैसा रहता है अपने डीएनबी का वहाँ पे? रेलवे का पासिंग रेट काफ़ी अच्छा है और अच्छी रैंकिंग पे ही जो दिल्ली हॉस्पिटल है, नेशनल रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल, वो मिलता है, और तो हम लोग का सीट्स काफ़ी ऊपर उठता है। तो जैसा आपने जाना मेरे को लगता है कि अभी बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और शायद आप मोटिवेट हो गए होंगे, और जो आपको गलत अफवाहें आपके साथ है कि ऐसा होता है वैसा होता है, वो सब सर ने पूरी तरह ट्राई किया है कि क्लियर हो, और मैंने भी फुल ट्राई किया है कि सर से मैं सारी बातें जान सकूं। लेकिन और भी जो रह गया होगा, सर तो हमारे साथ अभी हैं, हम और भी जानेंगे। तो निशान से जानते हैं कि हेल्थ यूनिट में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसा रहता है। So basically when you are at health unit, you are a sole in charge, so you have to work like an officer there. You will be the coordinating authority with all the different departments of the health unit. So one by one we come to those administrative work. The first administrative work is regarding your health unit which you are controlling. So regarding everything inside the health unit, you are responsible. You are responsible to bring all the medicines that you have to get from your higher authority, to always anything that is related like infrastructure or the emergency things that you are required inside your health unit, you have to do it, and you have to look after each and everything. Second thing, beyond the health units that you need to look is here the colony part. So in the railways, the doctor has been given the extra charge through some of his employees. Your controlling authority will be your health inspectors. Through health inspectors, you are responsible for the cleanliness and the sanitation of that colony. So that is one different part that you have to conduct. So with that part, see, you have to maintain the colonies, your cleanliness with your all the safai walas are under you. You have to maintain the drains and even all those, and in some parts of the health units you need to look after the stations also. But currently in the Indian Railways, we are putting some of the stations, a separate department is created, ENHM, Environment and Health Management Department, and in this department we are recruiting different people, and hence the medical department has not been given responsibility in some areas, like in my health units where we don't have to look after the station premises, but in some areas we are also looking for the station premises. तो थैंक यू निशान सर। मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप सेंट्रल हॉस्पिटल में हैं तो आपको अपने हॉस्पिटल के काम के अलावा और क्या काम करना पड़ता है, जैसे कहीं और जाना पड़े या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो, इसके ये सब चीज़ें मतलब आप बता पाएँ? मैं पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड बताना चाहता हूँ, या इसके अलावा हमारे को इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो डिफरेंट रन कर रहे होते हैं वो भी देखना रहते हैं। जैसे कि स्टेशन पे
पोलियो प्रोग्राम चल रहा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, अदर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो भी डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स देखता है और उसको देखने के लिए जाना पड़ता है स्टेशंस के ऊपर में कि वेदर दे आर रनिंग इट प्रॉपरली और नॉट। One more thing, I want to include that you are talking about the fitness of the employees. The main motto of the health units, as even in our that national immunization national health care programs, is that we have to do the preventive part. So under the preventive part, you have to do some health care checkups or which are known as the periodical medical examinations. So in the health units, we are conducting the periodical medical examination also. Plus, you are sole person who are responsible for the food safety. There are food safety officers which are appointed under you. So what type of food and different stalls that are available at the different stations under your health unit as well as the line stations. So you need to monitor the quality of the food as well as the water. So food and water we have to ensure safely. Under you we have health inspectors, the CHIs who look after those. They take regular samples and they report anything which happens to you, but overall monitoring will be done by us. So that is also one part. So in a health unit, you are person, you have to do different types of work, variety of works. The OPD will not constitute your 80 to 90% of the work. It will constitute only 30 to 40% work. But more often, you have to look over in a broad view, including all that will constitute as a working of a proper assistant divisional medical officer. सो थैंक यू डॉक्टर जीसान एंड डॉक्टर निशांत। सो अभी हमने जितने भी बातचीत की इनसे, तो आपको पता चल गया होगा कि सेंट्रल हॉस्पिटल की वर्किंग और हेल्थ यूनिट की वर्किंग में बहुत डिफरेंस है। सो मुझे लगता है कि आप लोग के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है और मैं और ट्राई करूँगा कि और डिफरेंट लोग जो यहाँ हमारे साथ आए हुए हैं डिफरेंट जोन से, तो एक हमारे साथ ईस्टर्न रेलवे से हैं और सर हमारे साथ नॉर्थन रेलवे से, तो और भी डिफरेंट जोन्स के लोग होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा वर्क कल्चर रहता है। सो थैंक यू और देखते रहिए हमारे चैनल।